So, sir, it's your expertise in the subject. So, I want to ask you, what has happened to Make in India as a project? Well, I think Make in India, like many other policies, is more talk than actual result. Because the attempt with Make in India was that, of course, please note that it said Make in India. It never said Make for India. Which means what? That in the globalized world, different countries of the world are, in a sense, competing to be locations of production of manufactured products for the world market or for other producers in other countries. India's share in that pie has been very small. And Make in India was essentially an attempt to try and get a larger share of that pie to India. Design of the policy itself was one where it did not address the fundamental reasons why India was failing to emerge as a significant location of production for world manufacturing in the way that in our neighborhood, much of that. By neighbor, you mean China. I mean, not just China, I mean also China is part of a larger East Asian region. And if you look at what has happened to manufacturing in the world, there's been a shift from the West and from Japan to the rest of East Asia, of which China is the most important. But China is also connected to that entire region. India has remained India. We have not been able to make even South Asia an economic region. Our political barriers to that have been far more formidable. So we are left with India. Now, if India as a individual economy has to compete with even, say, Eastern, Southeast Asia, the whole region, what does India have? Does it have a larger population? Because China is once part of China is part of it, it is a larger population. Does India have a bigger market? No. They have a larger population. East Asia has a larger per capita income. They have that advantage. If in India, does India have better infrastructure and logistics? No. They have had a much more developed infrastructure. And in that region, you can find all kinds of economies with all kinds of conditions. You want very cheap labor, that is available in some countries in that region. You want to do high-tech manufacturing, you have countries like South Korea, Taiwan, etc., which have evolved industrial structures which can do that kind of thing. So what were you left with as a matter of competitive advantage? Only thing that you had to offer was cheap labor. Cheap labor was firstly not sufficient to gain that competitive advantage, and cheap labor is something which is progressively losing its capacity to be a source of competitive advantage, because what is happening is that if you look at machinery and equipment, they are also manufactured or industrial products. Worldwide, you see a trend, long-term trend, where they are becoming cheaper because of increased productiveness in their production. On the other side, food prices have been going up. Now, for workers, first thing they have to spend on is food. Yeah. So even if you are not paying them more in terms of you're just tracking the increases in food prices, so they're just able to maintain their consumption level. Even when wages are not going up, the advantage is, in a sense, labor tends to become more expensive. It becomes cheaper to replace them with machinery. So you have increasing mechanization of and automation of production taking place, so that the cheap labor advantage is also no longer an advantage. But the policy was essentially about inviting the whole world to take advantage of your cheap labor to produce. From what I understand, आप ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उसमें सिर्फ चीप लेबर ही बचा है, और वो फूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो वो लेबर चीप रहा नहीं है, वो एक्सपेंसिव हो गया है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. ऐसे टाइम पे जब मेक इन इंडिया जैसा प्रोग्राम नहीं चलता है तो हमें बताया जाता है हम वी आर अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. सो इफ वी आर अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, व्हाई आर वी नॉट मैन्युफैक्चरिंग forget rest of India? We are not manufacturing for our own selves. Why is that happening? वो क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि पूरे दुनिया का 18% पॉपुलेशन जो है हिंदुस्तान में है. अदर देन चाइना कोई इन दोनों देशों के आसपास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. अमेरिका का पॉपुलेशन इज 4%, लेस देन 4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल. तो जब आपके यहाँ
18% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, तो आप नेचुरली यू विल बी अ बिग इकोनॉमी, कंजम्पशन तो होगा, बिकॉज इतने लोग तो है ना। लेकिन वर्ल्ड जीडीपी में आपका शेयर तो 18% से बहुत कम है, ठीक है। और वर्ल्ड के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग का है, उसमें आपका शेयर 3.5% है। उधर चाइना का 18% पॉपुलेशन है और 31% वर्ल्ड का शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का। हमारे यहाँ 3.5, उनका 31, 10 गुना करीब ज्यादा है उनका। ये बोलना कि आपकी इकोनॉमी बड़ी है, बिकॉज आप तो टोटल का बात कर रहे हो, बट अब पर कैपिटा टर्म्स में जब बात करते हो कि पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, तब वो टोटली अलग चीज हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री का भी अगर आप देखें, तो अगर आप 2015 के कीमतों पर ले, तो लास्ट डेटा जो दिखाता है कि पर कैपिटा मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड हिंदुस्तान में $310 का था। सर इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें तो? पर कैपिटा का मतलब ये हुआ कि जितना आपका टोटल प्रोडक्शन है उसको आप पॉपुलेशन से डिवाइड करके, हाँ कि प्रति व्यक्ति कितना प्रोडक्शन होता है आपके यहाँ। हाँ तो वो प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन जो है, इंडिया का अगर 310 है, चाइना का 3000 है, ताइवान का 10,000 है, कोरिया का 8,000 है। आपकी इकोनॉमी जो है बड़ी है क्योंकि आपकी जनसंख्या बड़ी है। जब आप इंडिया को दूसरे देशों से तुलना करते हैं जब, लेकिन आप अपने पॉपुलेशन के से जब तुलना करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी छोटी है। और इस छोटे होने में एक मुख्य कारण ये है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री है, उसका कभी पूरा डेवलपमेंट हो नहीं पाया। पर ये जो पर कैपिटा इनकम हमें बताया जाता है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, 5 ट्रिलियन, इसको अगर सिंपल भाषा में समझाना हो तो इट्स लाइक सेइंग कि अरे मेरी शादी पे 5,000 किलो बिरयानी खाई गई, पर 10,000 लोग ने खाई ना, 15 लोग ने थोड़ी जो खाई। बिल्कुल तो बिल्कुल 5,000 किलो 10,000 लोग खाए, ठीक है, हो गया भाई, इसमें क्या है। बट यही हमें बताया जाता है कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं।